Hello Nahil, what's up? I fucking love these headphones, bro. कितना मस्त है भाई हेडफोन्स. आ गया हेडफोन्स. यस, हेडफोन्स आ गए. मतलब साथ में एक और ऑफिसर लेके जाना. हम्म. इन गेम साउंड नहीं आ रही. इन गेम साउंड नहीं आ रही. क्यों? अरे ये क्या बकचोदी है बहनचोद. अभी. अरे यार. अब आ रही है. अब आ रही होगी ना. एकदम बढ़िया भाई गन्स लेके आ रहे हो तो पीछे पीछे दिख जाती है तुमको यास वगैरह. सर्च भी पिस्तौल नहीं से थोड़ी लड़ेंगे हम. इधर इधर बॉम्ब लेके आया मैं. इधर आओ इधर बजने आ गए यहाँ पे. सुनो इधर आओ. अब मैं बासी खाना थोड़ी ना यस. अरे वो लाइक नया है ना. मैं कह रहा था ऑल गुड नहीं रखता मैं कुछ. तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? नहीं भाई इनको दे मुझे तो फीलिंग कुछ गलत आ रही है. जीतेगा. अरे जीतेगा बोला मैंने. क्या लगता है किसके कपड़े उतरेंगे? आपने मेरे को जीतेगा चेक नहीं. किया? मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ. मेरे को लग हम रहा लोग भी सर्च कर रहे हैं. वही. हम लोग भी सर्च कर रहे लेके जाएगा तू. यार पॉल और वीड दोनों भाई भाई लगते हैं. हैं. व्यू के बड़े ले लो यार. चाहिए तो ले लो. बाप बेटा भी लगते हैं. तुम डिजर्व करते हो बात ये करते बात. इसने जब बोला इसके बाद तो अरे कोई उसको उठा के वहाँ ये लिख दो कि ये गेट यूज ना करे, पीछे वाले गेट से आएंगे. ये लो यार. वीर सर हैंड कप ले लो. बाद में दे देना. हमारे पास तो कुछ नियम सब रख के आए भाई. थोड़ा बहुत गेट पे लग जाओ और जो भी आ रहे हैं उनको जरा जल्दी सर्च करो. क्या? हेडफोन इधर आओ. अरे नहीं है कुछ यार. चलो मैं थोड़ा ना लगूंगा भाई गेट में. चेक कर लो सर, हमें भी चेक करो. चेक करो. ये तुम फट गए तो. क्या तुम फट गए तो तुम गए. और नहीं यार इसको गुब्बारा क्यों बोलते हैं? ये गुब्बारा. अरे ये गाल देखना गुब्बारे जैसी है. सर बहुत मार लो रॉबर्ट मार लो. नहीं फटने वाला गुब्बारा नहीं है. आ गया तू. हाँ मैंने बोला था भाई मैं आऊंगा. आ गया मैं. नहीं मुझे लगता हवा निकले. जेमेश बुंड को बचाना है हमें. यार फटने वाला नहीं भाई. इतना अच्छा डायलॉग मारा यार. क्या यार. और कौन बचाएगा जिमेश बुंड को. ये बहुत ही गलत समझ लिया जैसे. बाबू बोल दो ना छूने के बहाना चाहिए. भाई ये कितना अच्छा है भाई. फक. जमीन आसमान का फर्क है. कल जो यूज कर रहा था मैं उसका और ये वाला. कर लो यार कर लो. ये सारी हाँ केस है जिनको Can you be serious? Do you know like how delicate is this?
बोलो बाहर जाए, जब सिविलियंस की एंट्री अलाउ होगी तब जाके होगा, बाकी थोड़ा एंट्रेंस पे। और वो बंदा सुनो ना प्लीज थोड़ा सा पैसा बाहर कार्ड कर लो। ये सब रख दिए, कहाँ रखा पूछो? आपको बुला ले। हाँ एग्जैक्टली। सिविलियंस नहीं है, वीआईपी है। अच्छा क्रिमिनल्स हैं ये, सिविलियंस नहीं। बॉन्ड का भंडो चानी है। फाइन है वो निकालो। चोरी चोरी। भाई हम लेग्स बैक शरफ तुम चाहते हो तुम लोगों को ठीक है ठीक है। आज तुमने पकड़ा ही नहीं, तुमने टाइलर को पकड़ा। टाइलर बोल रहा है एडन को। अरे क्या नाम है इसका दूल्हे का? एंड्रयू। एंड्रयू को पकड़ा। चलो बाहर चलो शाहरुख। ऐसे दौड़ जाएंगे, हाथ पकड़ के ले चलो। हाँ बाहर फेंक किया उसको। अरे ओ बात जज खड़ा बोलड़ी के अंदर को आवाज आ रहा हूँ। बाहर कैसे लेके जाऊं? छोड़ो ये ना, टोनी सर इधर बैक साइड गेट कोने- किधर है? कोने में रह लेंगे हम यार, खड़े छोड़ो। बैक साइड गेट नहीं पता तुम्हें? नहीं पता, बताओगे? बाहर लेके जाओ प्लीज। कुछ जाओ। बता दूंगा। अबे यार क्या ना बताना यार, टोनी बता ना नहीं यार। कुछ राणा सर अरे यार मेरे बैग में मैं विद द बैक गेट। मेरे को खुद नहीं पता, मैं इसको कहाँ से बताऊं? कोर्ट हाउस के अंदर से जो जाता वही वाला। आओ एक बार पीडीओ के आएंगे पहले। कोर्ट हाउस के अंदर से जो जाता वही है। हेलो सी अंकल, हेलो विकी, व्हाट्स अप? अरे वो पॉल भी कैमरे को वाइट वाइट दिख रहा है, क्या ये फ्लोर? भाई मेरे को खुद पता नहीं है तो मैं इसको कैसे बताऊं? व्हाट्स दिस यार, व्हाट्स दिस? ओ भाई देखो कौन आया है ड्यूटी पे। कौन सा? एक बंदा है। सुनो नहीं नहीं पूछा देखो। नहीं 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 सही हो गया। कौन आया ड्यूटी पे? नाम बता। अमाया। सर मैं तो रोज ही आती हूँ और मैं बंदा भी नहीं हूँ, बंदी हूँ। आई मीन लड़की अच्छा हाँ, ग्रामर मिस्टेक। ओके सर। कहा देते दिन मैंने संन्यास ले ली थी गेमिंग से। हाँ हाँ ये कौन है? अटेंडेंट होगा। अटेंडेंट के गले पे रेड माफिया की चेन क्यों है? माफिया है ना? हाँ हाँ निकाल ले, हाँ हाँ निकाल ले निकाल ले। काम तो देख ही नहीं रहे हमें तो। हम तो देख ही नहीं रहे, हम तो हमारा आंख तो अंधे है ना। बाहर जाओ, लीव दे रही है। असिस्टेंट सर, न्यू असिस्टेंट लीव दे रही है, लीव दे रही है। चलो लीव दे रही है। चलो वॉक आओ। वो कैसा खड़ा है भाई? विजिल की तरफ से, वैसे लॉक है, लॉक चलो बाहर। विजिल की तरफ से। हाँ ये देखो पास। देखो रूम में है जो। लोगों को बुला लेंगे, चलो चलो। ऑफिसर्स बुलाना, वो चेक करने के बाद अंदर आते। चेक कर लिया मैं, सर्च कर ली, वीर सर ने अलाउ किया था अंदर। तो उनको उन्होंने सर्च कर लिया था, कफ था हमारे पास, वो लिए। अबे वो बोल रहा है कि तुम्हें बाहर जाने बोला था। चलो नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड। वीडियो पे कंफर्मेशन ले ले। चलो भाई आओ आओ पीछे आओ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर चले जाओगे। चलो बट उन्होंने सर्च तो कर लिया था। चलो आती है तो वो बज रहे हैं, आइसक्रीम खाने जाना है। उसको बोल रहा है मेरे को भाई, ये चीज मेरे को बोल रहा है। ज्यादा देर करने की शक्ति रहे आपके। वही अब मुझे क्या पता, मुझे तो बस सुपरमैन का गोली दिखा, मुझे लगा मेडिसिन होगा किसी का। तनुष लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट हियर इन द कोर्ट। क्या भाई? इसको जानना वाइग्रा क्या होता है और
अर्जुन से Let us पूछो। not discuss. It is getting very very difficult for me to handle stuff. अच्छा मैं समझ गई, मैं समझ गई, और मुझे अफसोस हो रहा है बहुत। और तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा? तुमने वीर सर से क्यों समझना चाहा कि उसका मतलब क्या होता है? लेकिन वीर सर ने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की। वो अलग बात है, मैं वो काउंट नहीं करती तो। बस तनु नो हाँ ये भी ठीक है, पीछे करो। आई एम वेरी सीरियस। तनु काम पे लग जाओ, जाओ आहाई करो। कहना क्या चाहते हो? क्या चाहते हो अब टोनी सर? इतना राइड अलोंग किया, इतनी मेहनत की, इतने सादा गाड़ी सिखाया चलाना, और आपके साथ पोर्ट्रेट सिचुएशन में चवर्स भी दिया। नहीं। चवर्स मतलब कवर। अच्छा अभी और क्या है उसके उसके बाद लिए? उसके बाद आज मुझे ये सुनने को मिलता है कि हाँ ही करने। क्या मेरे वर्क की इज्जत नहीं? क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं? हम जूनियर हैं तो क्या हमारी वैल्यू नहीं। नहीं? वॉक सैड। वो करना होता है, बोलना नहीं होता। अरे मैं कर ली, वो होता नहीं है मुझसे, आप समझ जाओ। वॉकिंग सैडली, वेरी सैडली। वही लिखो ना, हो जाएगा। एक मिनट रुको। हाय सुप्रीम, क्या सीन? हेलो वायग्रा चाहिए इनको ಏನ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಗುರು. हेलो गैरी, व्हाट्सअप? कहाँ गई है? पक्का आहा ही करने गई होगी। क्या ही कर सकते हैं। ये रही। आराम से आराम से। सॉरी 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 सॉरी। ओह बहुत हो रहा है, सॉरी सॉरी बता रहा हूँ मैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आ मेरे सर पे लगी। भाई ये लड़की यार। आपकी वजह से लगी मेरे को सर में, सॉरी बोलो। मैं क्यों बोलूं भाई? मैंने धक्का मारा था तुम्हें? हाँ तो फिर भी मैं धक्का मारी थी, मुझे चोट लगी तो इतना तो आप कर ही सकते हो, सॉरी तो बोल ही सकते अबे पागल हो दिमाग से? हो। एक सॉरी बोलने में कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं नहीं बोल रहा भाई। ठीक है, मान लिया मैंने, आपका दिल छोटा है। तुम अकेले कैसे मुझे काबिल ऑफिसर लगते हो जो Me too, लीजन me too, को me अपने too। मिट्टी में मतलब ऐसे ना पसल के खत्म कर दो। अरे एक बार आए दो बस लीजन। आ रहे हैं, अभी आ रहे, अभी आ रहे, आज आ गया है, आ रहे, वक्त आ गया है सर आपके। आपका आ गया है, ललन मुट्ठी में लेने का वक्त आ गया है। ओ ललन, हाँ सर। हाँ आइसक्रीम पसंद है तुम्हें? आइसक्रीम सब पसंद है भाई। अच्छा, डायबिटीज नहीं है तुम्हें? मैं समझ गई, मैं नहीं नहीं। अरे ओ भाई साहब, ई देखा अच्छा। टूटल गेट से जात रहे का बंदा। काफी अच्छे से समझाया, आई अंडरस्टूड। अरे ओ गेट बंद। वेरी रियलिस्टिक। खड़े रहने के लिए इसको देखा। बस मैंने Okay, इतना ही okay। बोला, that is one word, easy। इससे इजी मैं नहीं समझा सकती। समझ गई मैं, समझ Isn't गई। it right, वीर सर? अरे सॉरी, आई मीन सर। ओ वीर से बोल same दिया same भाई। दिखते हैं। अरे मतलब अरे यार गलती से तो- सेम दिखते हैं। सेम से थोड़े नहीं से। दिखते हैं, बट थोड़ा सा थोड़े से। सेम ही तो है। है? इसका मतलब आधा शहर ऐसे ही दिखता है, क्या बोलना चाहते हो तुम? हैं? ऐसा बाय डिफॉल्ट वाले हैं, साला कोई मेहनत नहीं करता। हाँ, तुमने कौन सा मेहनत कर लिया है? तुमने कौन सा मेहनत कर लिया होता? आप मेहनत किए इसलिए मार तुम लेगा अपना भाई। अच्छा, मूड मेरा एक क्वेश्चन है। मारले का 1.0 चल निकल यहाँ से। क्वेश्चन है, हाँ मैं तो कौन क्या ये हाँ, सब यूज तनु करते हैं? तनु थोड़ा धीरे बोलो, तुम चिल्ला रही। बोलो। तुमने क्या बोल रहे हो? अगर हम लोगों ने मेहनत नहीं हाँ कर हाँ, पाती तो जेबी सर को टेढ़े तो मेढ़े जरूरत मुंह पड़ती है, बनते जेबी भी सर नहीं। यूज करता है। Exactly, क्या जेबी सर को यूज जरूरत करते पड़ती हैं? होगी, जेबी सर तो यूज करते ही हो। किसकी जरूरत? किट में
क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जो ये लल्ला थोड़ा लेडी तो- घूम रहा है उसकी, या नहीं हमें कोई नहीं, नहीं। है उसकी? उसके नहीं। हाँ उसी के नहीं एग्जैक्टली वो उसकी हमें कोई नीड वीड नहीं। ई का बना रहा है तो फिर मुझे कैसे इतने पता सिंगल चलता हो आप? बताओ? मैंने कभी देखा भी नहीं है आज तक। अरे तो इट्स मतलब पता तो देखा तो मैंने भी बहुत चीजें चलो नहीं है, देखो लेकिन जिन इनको तो लोगों ने रहती वो है। नहीं देखा है वो मुझे लकी देख होते के हैं। विक्स की गोली लगी। अच्छी बात है, खाई नहीं तुमने। फिर तो रोजे लिया करो। ए? फिक्स कह रहे हैं वो। विक्स? विक्स हाँ। रोज लिया करो। विक्स होता है वो। हाँ? विक्स ही होता है, सॉरी। विक्स। हाँ विक्स जिंजर वाला। फिर तुम कब शादी कर रही हो? मैं नहीं कर रही शादी। क्यों? क्यों? ये तो हुआ। लिव इन में रहना ज्यादा अच्छा है। बाद में केटमैन तो भाग के करेंगे शादी है ना केटमैन? तनु भी तो करेगी हाँ उस टाइम और बाद। मेरे और मैं तो अभी वाला लाइन we are seeing each other. वो तो बलराम की मम्मी बताऊंगा मैं। Very much. बलराम की मम्मी। देख रहे हो जेबी वेरी मच। सर देख रहे Very, हो very उसके much. वर्ड सुन रहे हो विक्रम के? सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। चीफ के सामने अरे तो बलराम एक की मम्मी- नहीं, एक चीफ, बलराम एक मेजर, एक कैप्टन। मेरे को एक चीज बताओ। बलराम बताओ। की मम्मी तो केटमैन है ना? हैं? का बलराम के मुंह में? मम्मी बोल रहा हूँ। अच्छा मम्मी। क्या सुन रही है यार ये? देख लो केट, ये तुम संभाल लो, कोई ना। अरे पेट में अभी मिस बिगाड़ लिसन रही हो देख जाता है, लो। कभी मिस लिसन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या बोल रहा है? मिसस्पेल होता है, वैसे मिस लिसन भी तो कुछ होता है। ऑक्सफोर्ड तो भेज देते ये वो। वही लग रहा है, वही लग रहा है। Yes. मिस लिसन। Invented by deputy तनु गाइटोंडे। लगा मेरे को समझने में। तनु तनु सीनियर दोबारा डेप्यूटी तनु ये गाइटोंडे। मिस लिसन कौन अरे है? वो मैंने डेप्यूटी देख सुनने रहा में था। कूल लगता है। तो इन्हें डेप्यूटी सीनियर कर देते सीनियर हैं। बोलेंगे। सीनियर्स बोलत रही हां। सीनियर रॉबर्ट हटाई तनु को देते हैं डिमोट कर दो। सीनियर हटाई देते हैं जेबी। ई तू सतू मैं। हाँ तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता ना सीनियर। रॉबर्ट ठीक। प्लीज डू नहीं, तुम्हें तो आलस आता होगा ना सीनियर डेप्यूटी बोलने में। सीनियर अच्छा नहीं लगता तन्नू को सुनना, तो कह रही है डेप्यूटी। मत करो। तो तनु आज तो तुम डेप्यूटी ठीक है। तन्नू का सीनियर यहाँ स्लाइड कर दो। बाबू। तुम जब तक दूसरों की मम्मी बाबू अब रॉबर्ट सर और टोनी सर पठान कैसा वो कंडोम वाला पैकेट वापस दो। और भाई रेड कैसी थी? रॉबर्ट सर वो कंडोम वाला पैकेट वापस दो। मेरे पास कहां से आएगा? मूवी भी एक नंबर। मैंने तो दिया था। हाँ। ये चेक करो किसके साथ रॉबर्ट। गए थे देखने? मैं इनके साथ। वो यूज हो गया अभी। इनके साथ? कब यूज कर लिया इतने जल्दी कैसे यूज हो गया? बस इतना ही मतलब हमने नहीं किया, वो वापस उसकी कंडीशन दे रहे थे। छोटी सी हूँ मैं। छोटी सी हो ये कैसे आ ये गया? चिन्नम्मा के सामने कितना बड़े कितने छोटे लग अरे रहे हैं। सर ऊपर देख के बात करना पड़ा तो बस ये देख। कैसे आया? डायरेक्ट टू चेक बहुत घूमता रहता है हमारा टीम। यस यस। हाँ। अभी भी प्लान्स बनाओ, कल के प्लान्स। गाइस यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग बताएंगे हम? We are just डिस्कसिंग सम फ्यूचर प्लान्स। सर आपको सच बताऊं? स्पाइक लगा दूंगा। टाइलर सर। अब जबरदस्ती उस साइड पे आ रहे हैं, ना कोई सिक्योरिटी है, मतलब केस का कोई जरा सा भी भनक है तुम लोगों को? हाउ लाइक डू गाइस नो लाइक हाउ डेलिकेट दिस सिचुएशन इज? ऑनेस्टली सर बताया नहीं गया। +1 +1 नो वन हैज गॉट इन्फॉर्म्ड कि उसको वहां पे खड़े रहना है। हम तो गोली खाने खड़े रहना है, क्या करना है? प्लस हमें किसी ने बताया नहीं कि क्या मैटर है। ये मैटर तो मुझे पता है कि लेक्स सर का आई थिंक कि डू वन थिंग, बैक गेट पे जो सिविलियंस हैं उनको जरा हैंडल करो। जबरदस्ती जो भी अंदर लाइक फोर्सफुली अंदर आ रहे हैं डिटेन देम इमीडिएटली। और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है फॉर राइट नाउ। जब भी अंदर आने देना होगा तो बता दिया जाएगा। गॉट इट? कैन वी जस्ट लॉक द बैक डोर? जी भी सर कुछ बोल रहे थे अंदर ना पाए। हां It's not a public court case, right? सर। हां टाइलर कर देते। हां जो भी ऑफिसर आएगा लॉक करेगा, अंदर जाएगा। दैट्स इट। आई विल टेक केयर। और हम एक डिस्पैच नोट में से डाल सकते हैं कि लाइक सर मतलब यहाँ से हिलना नहीं है राइट? ये क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा वैसे, जस्ट आपने कुछ लिखा होगा। ट्रायल है, वैसे बुला सकते हैं। आई डोंट नहीं मेरे को सर पब्लिक को मिलना चाहिए, पब्लिक वैसे भी देख लेंगे, वैसे क्या ही दिक्कत है? देखो बुला लो। पब्लिक कल रिएक्शन Public ऐसे भी उससे देख। बढ़िया अभी बुला लो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ यार, कल की वेट नहीं करेंगी पब्लिक, आज ही करेंगी। एनी रेडियो ऑफिसर सर बता रहे विजन न्यूज़ में देखेंगे ना, ऐसा बोल रहे हो?
अमाया एंट्रेंस पे जाओ, एंट्रेंस पे। क्या हटा रहे हो भाई? नहीं है यहाँ पे कुछ। 10 for 10 हाँ बात तो सही वो है, तो ले यहाँ लो, पे तो तो कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम तो कचरा साफ कर रहे थे। With searching, without searching, do not allow any. अरे इसको ले जाओ। मतलब मीट सर के साथ है। स्टाफ और सॉरी अपना ये स्वॉट। वही इसीलिए तो बोल रही है ना अभी तब तक तो ले जाओ यार। यहाँ पे है कोई यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है। जैसे भाई तुम आओगे, तुम बाहर आओ, इधर आओ। वीर सर वहाँ लेके आता है। फायर जो डिस्पैच जो भी ऑफिसर कोर्ट हाउस आ रहा है प्लीज राइट और लॉक ये नहीं, ये शाहरुख भोग रहा है। पीछे वाला जो गेट है ना वो सीधा कोर्ट हाउस के अंदर आता है। stay open. Judge का order है कि the court case is gonna be public. क्या बोला ये? जज का ऑर्डर है, कोर्ट केस इज गोना बी पब्लिक। भाई यार कितना क्या हुआ एंड आई गॉट इन्फो कि बम बाम होने वाला है। अरे भाई चुप। यप। वो नहीं, अगर अरे कोर्ट केस विल बी पब्लिक वो तो चलेगा बट पीछे से वो एंट्री है नहीं ना। ठीक है, आई नो, आई एम नॉट सेइंग मेरे को उससे कुछ नहीं, बट आई एम सेइंग कि अगर Student take to dispatch. Good. Let the civilians come inside courtroom and do not lock any क्या doors. हो सकता है? Let them come in. It's a public court case. एक बात बताओ, वही मैं बोल रहा हूँ। जब वो सामने से खुद सरेंडर करने आया है तो And don't let any media guy to वो पॉइंट तो है। entering with his cameras and maybe he is also tired of all of this now. Maybe अरे ये भी तो हो सकता है Swat is here, जेपी right? सर जब वो सरेंडर किया था ना, आपको पता है उसके तुरंत कुछ सेकंड्स बाद ही मतलब कुछ मिनट्स बाद ही एक ट्वीट आया था एक और लीजन के नाम से, पीआर लीजन, सेम I इमोजी। know there are multiple guys, but that's the thing, right? ठीक है तो कोई बात नहीं, SWAT will be here, we'll be having a lot of security. वो तो ठीक है। Judge is inside, right? Okay, like जो भी अंदर आ रहे हैं, first check their ID cards and वो हट गया अभी। अरे हम फंस गए। उसके बाद पर वो छोड़ो, ये कैसे हटेगा? क्योंकि ये तो स्पाइक पे लगा था। हो गया तो क्या अंदर आ रहे वो आप करोगे, हम कर देते हैं। भाई स्वॉर्ड ऑफिसर पक्का लेने पहुंचते हैं ना? पता नहीं है ना, वहीं पे है, प्रिजन में ही है। आई हैव अ डाउट। भाई मेरे को तेरे पे भी डाउट है। तू राणा सर है क्या, सब पे डाउट करता घूम रहा है? नहीं, आई हैव अ डाउट। बोल कौन है ये जो प्रिजन ब्रेक। अरे वही उसको ही लेके आ रहे हैं। जेल करे और फिर बाहर लेके आए। समझाया था इनको ये चीज पहले, पता है? डाउट ये है कि जो हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू किया है फॉर द डीए गाइस, उनका क्या करना है? रिजेक्ट क्या करना है? इंटरव्यू लो, तुमको लगता है केपेबल है तो ले लो। 1 है 2 है 3 है 4 है, बहुत सारे हैं, बट सर 3 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने। 3 लोग और 3 लोग बहुत सारे होते हैं। ये रहा। सर 3 लोग में से प्रशांत है। प्रशांत बंदा एक जो है उसका इन लोग को रोक इंटरव्यू लो, हुआ, वो भी उसके गारंटी। आधे घंटे बाद से उसने मेरा जान खा लिया कि रिस्पांस दे दो। ठीक है, कौन कौन है? बाकी प्रशांत है और वो- कौन कौन है? सर पता नहीं, 3 आया है। नहीं। दो का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि प्रशांत उस दिन तो पूरा आंसू निकल गए कि हम भी तेरे से वेट कर लो अपॉइंट Do प्रशांत not let और them क्या। take any हाँ भी equipment कर ही inside. लेते Just हैं। still have their Sir, but- notepad. थोड़ा सा है, उसको ये बोलना पड़ेगा द गाय इज वेरी इमोशनल। आई मीन छोटी-छोटी बात पे थोड़ा सा इमोशनल तो वो भी है। बच्चा है क्या? मेरे मुंह से भी निकला था। तो you need to clarify in the things कि it's वही not चीज easy है to ना, be अगर up. वो चीज अगर मान लो किसी बंदे ने किसी ऑफिसर ने सीनियर ऑफिसर ने डांट दिया तो अभी लग जाएगी तो वो गलत है। हाँ तो you should know. सर 1 मिनट। टाइलर सर कमजोर दिल के लोग पीडी में क्या करेंगे? He is not joining kindergarten हाँ, school क्या? ना जहाँ पे He's not sure. ठीक है बात का करते तो हैं। लगत रही कि हारा हुआ केस है।
मुझे भी लग रहा ए है ए ए क्या हरारत क्या? गोदाम फील आरत रहे फील आत रहे। वो बहुत ऊपर नीचे फील आती है, बैठ जाओ। अगर के सारे ललन तुम लड़ना चाहते हो? त्योहार आखिरी दिन होगा ए गो नी माय डाउन। अरे यार ये एडवेन सब एक ही बिरादरी के हैं। लड़की दिखी नहीं बात उधर। उसको तो नाम भी नहीं पता है। पूछते आप कौन? आपको अगर वो बंदा रेट तो बिल्कुल नहीं हो। कोटा उस पे बॉम्ब लगा सकता है तो कोटा उसके अंदर वेपन नहीं पहुंचा सकता। फिर वही मम्मा मम्मा सिविलियंस तो अंदर आ जाएंगे, गैंग मेंबर्स भी होंगे अभी जो हाथ छुप के आएंगे। अरे अभी SWAT है। बट जब देख लेंगे यार। मैं तो देखो तब क्या हुआ था, तब बंदा छूट मतलब ऐसे फ्रीली घूम रहा था, बट अभी पीडी के कस्टडी में है ना, तो ऐसे कैसे कर लेगा प्रोवाइड? कोई भरोसा नहीं है किसी चीज का। चपड़ चपड़। अरे बोल बोल वो इंसान अकेला ललन जी हां देखिए अपने थोड़ा इतना कहां गए? तो मुझे तो ये भी डाउट है कि वो लीजन बाहर नहीं जा रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा धमका के बाहर कर दीजिए। ओए ये वाला इनके मित्र बाहर सुन तो मैं हां रेड माफिया सर ऐसा मतलब ऐसी फोटो मैं भी ले सकता हूं। दंगे करवाए गए। बोल रही हूं फंसा यहां नहीं आ सके हो। तुमसे लीजन तो की बट सर बता दो। नेक्स्ट को पकड़ किसका सेवियर? किसी का प्रभाव है। बस ऐसे ही डाल दी मैंने। तुम्हारा कोई नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। फील गए दोनों। हाँ भाई हेडफोन्स निकाल रहा हूँ भाई थोड़ी देर के लिए। बहुत वो है बे, पसीना आ रहा है। नॉइस कैंसलेशन तो है इसमें। क्या है 311 पे? हेल्प मी ये ना ये मत भाई। सब देखो गेट टूटा। अरे भैया उसने तोड़ दी, लल्लन ने तोड़ दी जो बचा था। ये चौथी फेल। पूरा एंट्रेंस ही बंद है यार, कैसे नाक नुक के निकल रहे हैं लोग। हाँ जीबी जी यहाँ पे थोड़ा कितना टाइम लगेगा उनको अभी आने में कन्वर्ट? 5 to 10 minutes max. They are moving already, I think. Direct we go. ये दरवाजा थोड़ा बंद आ रहा है। पीछे वाला दरवाजा यूज कर लो यार। ये नाक वाक के मत भाई निकलो यार। बंद करे ले ही गए रहता है। अरे वो ये रॉक एक्चुअली थुलथुला पीछे वाले गेट से आ नहीं सकता है, थोड़ा छोटा है ना वो। ओके ओके थोड़ा बचते बचाते टूटे एरिया से आ जाता है। ठीक है वीर एक मिनट आप साइड में भाई बेचारा नहीं बे, आगे पीछे तो आ ही सकता है। आ जाओ ना यार, तुम खाली बैठ रहे थे, आ जाओ। हैंडलर में तुम पीछे से नहीं आ सकते? थोड़ा कंजेस्टेड है। वैसलीन सही है? नहीं ठीक है सर। उड़ता गुलाल जैसे चीरा का चमन। यानी यार इस लल्लन को ले सकते हैं पीडी में, मुझे भी तो ले सकते हैं। डांस नॉट अलाउड। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात कर रहे हो? पहले की चुटिया काटिए। करस ठीक है। हाँ पूछो क्या पूछ रही थी तुम दोनों सबसे? तो पूछना इस हाँ मैं लल्लन जी भारत में आए हो क्या? अरे टाइलर सर ये वायु सर आई? हेलो सर, आप मुझे कुछ बताने वाले थे, जब कुछ होने वाला था आपने इन्फॉर्म भी नहीं करा अभी तक। ललन सर वो इन्फॉर्म कर दिया गया सर। ही इज आस्किंग बट शी इज आस्किंग फॉर बाय सर। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। आई अपोलोजाइज। गुड नाइट। क्या गुड नाइट? कुछ जो नहीं सर, अंदर से फीलिंग कुछ और आ गई थी। देखो सीजू कहाँ रह गया, याद आ रही है मुझे। सर कितनी देर में स्टार्ट होएगा? इन फ्यू सर। गाना था ना अपना बंगाली में, लाल जूतों पाए। टाइलर वैसे लल्लन सर की से चमड़ी तो है, मतलब ऐसा टाइलर सर की 1080p, लल्लन सर की 144p। आपने सही बोला। तुमको देखो पीडी में ही आना है, ठीक है? जी सर। जेबी सर
अरे ठीक है ललन सर ई बंदा have a seat, have a XD है सर, देख लो कैसा कैसा बात करत रहे। बॉडी सेविंग कर रहा है मास्टर गन सप्लाई कराओ क्या? बात करते व्हाट इज सेम का नाम रहे नाम बतावा। अरे भजन सिंह हमारा नाम ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह वॉरियर है वो। गलत नाम बताते रहे। ये रे वॉरियर कैसे हैं सर? वॉरियर है वो। देखा मेरा गला ठीक है क्या? अबे मनिया सुरवे नाम है भैया, तुम और कंफ्यूजन मत ऑल मत उठ भाई। अरे यार चालू करो भाई केस। रात हो गई। सबकी उसमें होने कर रहा है। उस दिन एग्जाम दे ले रहे। आहा ही सब निकल गए। मैंने सुना तुम भाग गए थे डर के फट गए। नहीं भैया पूरा एग्जाम दे ले रही। हाँ ही हु सब बैरल रहे। बहन है मेरी एक और होता है एक और का बोले भैया ले लो एक दिन एग्जाम पकड़ के। रीचिंग आई थिंक दे आर रीचिंग। ये सब होता है फिर डन सर। इसे हम गुड सोलो कैडेट ओनली सर। 4 की तरफ से कमिंग किधर से रास्ता है, किधर से आएंगे वो लोग? इधर कौन आएगा मेरे को नहीं पता भाई। बैक साइड से आएंगे, यहीं जो आएंगे वो है अंदर से जाना है और अंदर से ही है वो। किधर से रास्ता पीछे से? 23041 क्या ढूंढ रहे हो? जैसे आए वैसे ही जाओ, उस तरफ जाओ। ओके गाइस, बी अटेंटिव प्लीज। सुन लो उधर चले जाओ। ठीक है अंदर थोड़ा सिविलियंस पे नजर रखो। कम टू कोटोस। अब तो आदत सी है मुझको। वही जो आरएम से मार खाता रहता है। आरएम वो क्या होता है? कुछ नहीं यार मतलब ये कौन है? आप लोग बैठ जाओ प्लीज सारे। यार पापा से मार खाने वाले। बैठ जाओ बैठ जाओ। पापा से मार खाने वाले। एवरीवन प्लीज रिमेन साइलेंट। अरे साइड हो। 4 रैपर काम करो अपना तन्नू। होगी ना पक्का गोली खाओगे। और बाप के नहीं खाए हैं, बैठो जाके ये गाँव हो भी सकते हो, वही भी गोली खाओगी। लिख के बोल दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आज कोई जज है? हाँ यहाँ पे है? अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी ट्राई कर सकती में हूँ। आ गए। आ जाओ। जज वहाँ पे आगे जाओ, चेकिंग कर ले लोगों की। एक बात बताओ, जाओ। यहाँ लॉयर खड़े, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब हेलो आप अंदर आ जाओ। सर गो आउट प्लीज। एक कार्टून से दूसरे कार्टून को मिलते हुए। वो टोटल देखो बीसीएसओ की व्हीकल जलाई है इन्होंने। बाकी इनको सेल्स में रख दो नीचे। काम करो, जब तक ये खत्म नहीं होता वैसे ही रखो इनको, फिर प्रोसेस करते हैं। इसको सर्च कर ले और अभी के लिए हाथ खोल के साइड में बैठा दे। साइड में बैठाना है, नीचे सर्च कर पहले सर्च कर। कोर्ट हाउस में आया है ये जो लेक्स है ना, लेक्स is right now. According to his statements while he was under your custody, that he will be revealing पता नहीं मैं ऑटोमेटिकली कैसे कप्स पेन मत वाले तो अपने आप चेक कर, वो चेक करो उसको। कैसे हो? जज जा रहे हैं, जज से नीचे उतरो। यस यस मैं तो प्रोटेक्शन दे रही हूँ। हाँ नीचे उतरो, नीचे। बोला था मैंने। सेल्स में नीचे प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं ये कुछ नहीं कर है। रहे हो इधर? एक काम कर, गाइस ले जाओ इनको यहाँ। ठीक है, चल रही है ओके। यार संभाले यार रॉबर्ट अपने बच्चे। इसमें कुछ स्टेटमेंट सरेंडर नहीं किया वो बोला है ना, अगर जज इसे संभालू। हाँ हाँ यार अपना बच्चे को संभालो ऐसे क्या? कौन बच्चा? ये बुलवाई बोल दिया क्या यार जो जूलिया चुला। नहीं ये मेरा थोड़ी बच्चा है। बात ही नहीं कर रहा है। अगर जो भी Yeah, I बात did. की है No, not now. रॉक क्वेश्चंस ऐड कर दी, चेक कर लो और कुछ क्वेश्चंस तुमको ऐड करने हैं। वेयर इज ही राइट नाउ? नीचे वाले सेल्स में आ गए शायद। आ जाओ रॉबर्ट नीचे। गाइस जिनको भी अलाउ कर रहे हो सर्च करके अलाउ कर रहे हो ना? I'll wait at the ना तुम वहाँ पे वेट करो।
मैं तो हूँ मुझे मैं कहाँ जाऊँगा नहीं मैं उस चीज़ के बारे में तो नहीं बात करना है। आर यू रेडी? वो बताइए। या born ready. कौन रेडी? लेट्स सी। ओके ओके, मैं एक बार जज से बात कर लेता हूँ, फिर आप इनको लेके आइए। विल स्टार्ट अप बता दीजिए। ओके What are the security status right now? Everything is taken under control. Sword officer outside. All right. Go ahead. आप इनको brief कर दो. Robot? Stay here. हाँ, अभी ओके। Okay. हाँ हाँ Go with the grocer and help them. कोरी का नाम तो हक दिया। Make sure वो lock है ना। भाई अभी कोरी किसने बोला था? Not me. नहीं ठीक है, आपके हिसाब से वो इनफ है तो ठीक है ना। वो फिर तुमको कुछ नहीं लगता है? क्या हो गया अरे वो क्वेश्चंस थे एक और सर नाम मत बताओ। क्वेश्चंस थे क्या पूछना होगा? क्वेश्चन है आपकी तरफ से। कोरी आपने बुलाया था ना अभी? मेरे को क्वेश्चन हाँ। बाबू बोला भाई सारे क्वेश्चंस जो है वो देख लेंगे। अच्छा मेरे को फिर गलत सुनाई दिया। मन में जो क्वेश्चन अगर बताओ हम लिस्ट लेके ना भाई मेरे मन में क्वेश्चन होके भी क्या ही फायदा अच्छा है। अरे तो वो रॉक को बता दो अगर कोई क्वेश्चन हो क्योंकि वो ना पूछने ना वाला ना है। चले जाओ, आप भी ले आओ उनको साथ। इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। आ जाओ मोटे। और बाप के काहे मोटा है? आराम से यार, आराम से। टैक्स हमने भरा है, उसी का ठूसते हो तुम पूरा टाइम। टैक्स का बत्तिया बनाओ, अंदर ले लो, 3 बार ऊपर बाहर ऐसा है, आगे पीछे। ललन भी है। सॉरी ये लीजन है। लल्लन की गांड फटी, लल्लन की गांड फटी। आओ भाई। यहाँ पर मैं करता बैठ जाइए लेफ्ट सर, मेरे लेफ्ट में बैठ सकते हैं। सब दिख रहा है। चश्मा निकाल। बोल मसूम भाई। बोलो बोलो। कोई बंदा दिख रहा है? दिख रहा है मेरे को भी, नहीं दिख रहा है, एसएमजी दिख रहा है। नहीं बंदा दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। सब दिख रहा है भाई। कहाँ पे भाई? वो देख खड़ा हुआ है। मेरे को भी मिसिंग है ब्रो। ऐसी बातें कर रही हो। फिर लोग ऐसा कोट ना भरा भरा होता है। अरे उसको ये एसएमजी वाला और वो एआर वाला नहीं दिख रहा है मेरे को भी। अबे खड़ा तो है। अरे दिख रहा है भाई, तू चुप चुप शांत रह, कोई दिक्कत नहीं। दिखने से क्या फर्क पड़ता है? और क्या तो कह रही हूँ लल्लन को ऊपर टांग दे। इसलिए कह रहा हूँ, लेके भूल जा। वही फ्रॉक पहना के। नंगा बंदा। मैं तो बोल, मैं भी क्रिम से आता ना पक्का बोलता है, तो मेरे पकड़ के झूल जाओ। देखो नंगा बंदा है ऊपर। सीधा ऊपर देखना, ठीक है? वो कौन है वो ऑरेंज पजामे में? अबे वो बंदे के आँख वो तो नंगा तो ठीक है, उसमें आंखें क्या दिख रही है बतख जैसी? किसकी बात कर रहे वहाँ हैं? एक मैंडेट खड़ा है, कहीं तो फ्रॉग बैठा है। कहाँ बैठा है? हाँ फ्रॉग राणा सुन सर, करके बोल कहाँ रहा ध्यान है। है आपका? अरे राणा सर ऊपर फ्रॉग बैठे, उनको हकाल दो ना थोड़ा। पानी पिलाओ जाके। कहाँ बैठना है? कल दे तुम लोग पान तुको पे। मेरा ध्यान मुझे ऐसी जगह आओ राणा सर बैठो, आओ बैठो। ये दो अभी जो है बैठो ना, बताता नहीं, रहूं। तू ये बता, तेरा ध्यान हमेशा ऐसी जगह पे क्यों जाता है? कोई ओ साहब, क्या हाल है साहब? अरे एयरपोर्ट सर, आपको कोई और नहीं बैठना था? सही तो हाँ मेरी जान। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दो, कौन बैठे हैं? है किधर ये? पता तो मुझे बोलो। माफ कर दो। प्रशांत कपूर है नल्ला पाओ। क्या? ध्यान भी नहीं है। कहाँ सही बाल आ गए जी। अरे देख लेंगे। अभी 1.5 हफ्ता हो गया, अभी क्या है? ये तो खुद ही टूटा पड़ा है। क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा। छप्पी मार के बैठा है जैसे इसका घर। चढ़ गया नाम। क्या ही करें यार? आपको लोग बेहतर पता है ना, आप देखिए। अभी बैठ जा। जज, सुन जूलिया, एक बार जाके जज कुर्सी पे बैठा। जूलिया बैठने जूलिया लगी। देख, डेयर है डेयर।
जूलिया नहीं बिल्कुल मेरे को एक बार याद है मैं जज की टेबल में सुसु करा था किया थोड़ा उसने मेरे को पता तो मेरे को उंगल कैद होने वाली थी ऑलमोस्ट Everybody just settle down, guys. Judge will be coming in a second. चुप वो चंगा रुका इसी वहां से आ रही है ठीक है सर ठीक है ओके सर सॉरी सर अरे यार थोड़ा विस्पर का मतलब होता है शांति से बात करना सर, ठीक है? वो नहीं होता वो जो पहनते हैं ना सिविलियंस को, और मीडिया वालों को चेक कर लिया कि मीडिया वाले देखो देखो सॉरी चुप हो जाओ बे। क्या है कौन बोला? चुप हो जाओगे कोर्ट में व्हाट्सएप लाना जूलिया को नहीं देखा। हाय जूलिया। आवाज कैसी है मीडिया वाले को अभी ठीक है? सर्च हाँ भाई कि वो लोग कुछ लेके हाँ हाँ कच किया होगा एंट्रेंस पे। ठीक है डिस्पैच यू सर्च द मीडिया पीपल राइट। पॉल कैसे हो? ओए पॉल क्लाइम पे किया है, मैं दिख नहीं रही हूँ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज मैं हूँ यहाँ पे कोर्ट में बिल्कुल मस्त व्लॉगिंग करने। भाई आधे घंटे गाइस मैं बिहाइंड द सीन्स तुम्हें दिखाता रहूंगा, अभी बाद में मिलते हैं। I want you to be quiet in the courtroom, please. Make sure it's a decorum of the court. क्या नाम राणा है? सर मैं दिख रही हूँ ना? Whoever is making unnecessary noise, throw them out of the courthouse. देव को निकल दो बाहर। अरे देव ने क्या किया? देव कैन यू प्लीज स्टैंड अप? सॉरी एयरपोर्ट है सर जिसके कानों में। ठीक है नेक्स्ट टाइम ये चीज हुई एक भी बार फोन बाहर निकला सीधा हम बिल्कुल सर बिल्कुल डन 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 डन। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फोन से हाँ। देख लेना बंद और कर दी। ईयरबड्स में रिकॉर्ड तो अपना टोरा है कोई नहीं। अब ये चैम्बर कहाँ से आ गया? थोड़ा रास्ता दे मेरे को बाहर आने। पांच में चैम्बर है। Everyone silence please. बड़ा इसको तो जुकाम हो रखा है तो खड़े होने बोलो जज एवरीवन स्टैंड अप जज इज हियर अरे जज आ गया, मैंने देखा नहीं। स्टैंड अप एवरीवन नहीं मैंने देखा नहीं, सॉरी। नहीं तो मैं सब खड़े हमेशा हो खड़े जाओ भाइयों, होती हूँ। सब खड़े हो जाओ, जज आ गए। ऑफिसर स्टैंड मैंने सिखाया तुमको ये। ladies and gentlemen, am I audible? ओह सस्ता लेक्स भाई। नहीं नो थोड़ा तेज बोले सर। नहीं नहीं यस सर। माइक्रोफोन दे दो सर उनके हाथ में। मेगाफोन सॉरी। ड्यू फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ, अच्छा रहेगा। सर स्पाइडर ऑन पाएंगे। वन लेग। जज के लिए तो लाएंगे। इरशाद जज के लिए तो लाइन चौकी खड़ा हो जा। अगर जज ने सुन लिया तो मैं जेल जाऊंगा। नहीं Yes. जेल Should be जाके audible now. यस यस सर। यस सर। Okay. So, Yes, sir. ladies and gentlemen, myself, Judge Grayson. So today we are here for the state versus Lex Maverick proceeding. एयरपोर्ट का अनाउंस Alright. So the prosecution can start with their case. ये और दो इस जज को आए कितना टाइम हुआ? Hello guys, am I audible? स्टार्ट हो गया भाई, बैठ जाओ। Okay. बैठ Yes. जाओ Sir. सभी लोग। So today here, we all are present here for the case which is Mimmi? against one of अच्छा our वो वाला। reputed businessmen, Mr. Lex Maverick, who used to own Galaxy Club. Today he is being accused for two specific cases. One, which is the case for terrorism, and the other is for the murder of our late respectable officer, Mr. Sangram. अरे मैं बैठा हूँ। Mr. Lex Maverick surrendered yesterday for being in the situation in which Officer Sangram was stabbed, and today he's been presented in the court as he claims that he is Legion. Legion in the city of Los Santos is known to be a body which is how we can say, which is like responsible for most of the bomb blasts
or any kind of kidnapping, giving out bounties on Twitter in this city. So I hereby present to the court that we should provide justice to Officer Sangram and all the necessary Oh my people God. who died due to this certain scenarios in which Mr. Lex was being involved. Legion नहीं है. मैंने बोला था तुझे. Thank you. Lex के पीछे से फोटो. Lex के पीछे Defense, से you may फोटो आई. proceed. Before that, I would request the people standing behind please be seated. Barry Legion? Julia, I'll throw you out. Also, defense, are you sure you want to proceed by yourself? You don't need a lawyer. Yes, honorable judge. Okay. Yeah, you can proceed with your Honorable judge, क्या तू ही है वो मोल? नहीं भाई. welcome you to the city of Los Santos. Matthew Williams. Vision music. And I just want to share that this whole case is actually preposterous. It is not needed. I am not Legion. I gave certain information and I shared certain things. I have proof which shares that I am not Legion, and I would like to showcase instead of my counterpart, Officer Rock, Sir, who is attorney just whoever the fuck you are. Sorry, officer, maintain your judge language, for sir. the language. I'm so sorry. If you don't repeat it. Yes, I'm really sorry, honorable judge. I'm not as good as him in just opening statements. I would like to present proof to you, which I am डूब गया भाई. केस डूब गया. 110% sure that PD does not have a single piece of evidence that I am actually Legion. Okay. So, gentlemen, first of all, did you show this proof to the PD? I did not because I am actually scared of PD itself, and my life has been in danger, and I will be able to prove that to you in court. So, are you comfortable in sharing whatever proof you have in public, or you want a closed chamber meeting? I can share it with you directly over email and happy to share it in public. The reason I'm presenting and I asked for a court proceeding in front of a judge was because I was scared for my life, and the PD has kidnapped me and tortured me, and even some of my folks, although I will not be able to prove that. That's why I don't want to mention it. But yes, that's actually the truth. Okay. So, you can mail me the documents, and you can mail Officer Robert as well, so he can show that on the screen. Sure, absolutely. I'll just send all of those across. Meanwhile, I would like to provide the opportunity to ex-DEA officer Rock to begin and showcase proofs that actually when I say I, Lex Maverick is Legion. Thank you, Honorable Judge. So, Mr. Rock, you would like to... Yeah, I would definitely like to proceed, but not initially with the term Legion. I first would like to go with the murder case of Officer Sangram Singh. So before that, I would ask Mr. Robert to be at the witness box over here, and Officer Robert, do just share the MDD report to judge regarding. Yep. Give me. It's already mentioned in the report I gave. Yep. To judge. Judge, I'm just gonna forward out that report to you. Give me a minute. Officer Rock, Mr. Rock, it would be commendable if you can showcase that on the screen over here. Sure, sir. Yes. If it's an image, you can showcase it over here, else you can... It's a proper document, sir, so it will be Okay, yeah. difficult. Yep. You can forward it. I can convert it into the MTT then. Not that.
BT कॉपी रखनी है बता No, it's fine. Give me a minute. क्या भेज रहे हैं? लास्ट वाली फोटो बढ़िया है ना? शांत हो जाओ। So it's been forwarded to you. The case title would be Murder of LSPD Corporal. And I would like Officer Robert to be at the witness box. Yes, I have been submitted this report by Officer Robert before the trial, sir. so I have gone through it. Yeah, you can continue. Okay, am I audible? Yes, you are. Okay. Okay. Hold Yeah. on a second. So Officer Robert, I would like to just, I want you to go ahead. So Take के Officer बैठ जा। Robert, I want you Yeah. to repeat along with me in the name of the Constitution of Los Santos. In the name of the Constitution of Los Santos, क्या? Whatever I say whatever I say will be truth, will be truth, nothing apart from the truth. nothing apart from the truth. सारी Yes, लड़कियां मेरी you can बहनियां टाइप go हो गई तो ahead. Officer Robert, I would like you to just ए पॉल mention about yesterday's incident, पॉल पॉल how Mr. Lex राइट में कौन Maverick बैठा है? came to PD and कौन? mention him having the lethal weapon which was used in the murder of Mr. Sangram. Okay, so yesterday Lex Maverick came in PD and he was saying कि मुझे surrender करना है, I'm Legion, and वो हमें एक dagger hand over करते हैं जिससे Corporal संग्राम सर का मर्डर हुआ था, and we already have a forensic report including the postmortem report जिस dagger से वो murder हुआ था. We also have the dagger as well जो Lex Maverick के pocket से confiscate हुआ था. We have the evidence जिधर Palito yacht पे there was a guy standing having a dagger on his hand and including Corporal Sangram's body. Okay. Can you provide me the medical reports for that particular Yeah, sure, incident? sir. Sure, the forensic report would be submitted to you. Give me a minute. सुन सर, ये माइक में बोलने बोलो ना, रोक सर। पागल है क्या गांडू? पानी दे उसको। तेरे को 2 बार पानी दिया मैं। तेरे को 2 भाई क्या चल रहा है पीछे? अरे माइक में ही बोल रहे हैं चिकू, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। पानी दे उसको 2 जो मैंने तेरे को दिया। So the forensic report is just been forwarded to you. Kindly check. खोल दे, बैठ, खोल दे। आलमंड पहन लो भाई, मेरे को लग रहा है लड़ाई होगी। I guess the particular report can be showed on screen. I think so. It's a single page thing. Yeah. हमको भी देखनी है रिपोर्ट। Yeah, we can actually. You want Give me me a to? minute. Including the evidences. Yes. भाई हमको भी देखनी है रिपोर्ट, हम क्या पे करने के लिए आए हैं? इसको बाहर भेजो। Okay, doctor, It's straight. हम नहीं जानते इसको। रेसिपी बोलना था यार। तन्ने इसको बाहर फेंक दो जरा। Kick him out of the court, please, as soon as possible. लास्ट वार्निंग है, बैठ जाओ। लास्ट वार्निंग लेट इट No more last warning. Throw me out. सारे सिविलियंस की इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं है। It's very small. It's fine, Tyler. Last one. अरे हवा में चेन। Show this image. What I've sent you. ट्विटर पे डाल दो यार। ऊपर है पीछे, ऊपर है ऊपर, हमारे ऊपर। Okay, so honorable judge, as you can see,
This the guy standing over there is Legion, and जो dagger उनके हाथों में है वो Lex Maverick के pocket से confiscate हुआ है, and the guy laying down over there, that is our officer Corporal Sangram. Okay. Yeah. And regarding the report, I need a moment to go through it. To the pocket evidence as well. Yep. हाँ बोलिए We'll update the report for a second. You can see that dagger as well. These are the pocket evidences that were being provided. जूता से बारह हमें पता नहीं क्यों मेरे को तो 10 रुपए में दिया भाई जूलियो को भगा दूंगा मैं। कर रहा बस शक्ल शक्ल की बात होती आप शक्ल से कमीने हरामी लगती हो I mean, I hope the report was And I'm supposed to be particularly made cute. before like presenting in the court, right? Yes. मैं तो गुलाब की बात These are the forensic reports, sir, that was being provided to us. In this report was given by Officer Rana. So I would like Officer Rana to just give out a proper description what it states, as he is the head of forensic department. We are not done with the objection. We are not done with the witness yet, which is Officer Robert. I can cross question him. रिलैक्स भाई lawyer For भी है। sure, you can. Yeah. Do I have the permission, Honorable Judge? We are just going ahead with the what we say evidences. We are still not done. It's just the thing. We in order to explain out the report, we are just calling an expert. That's it, Mr. Lex. Yep. Mr. Robert will be here back. Don't worry. Permission to allow Officer Rana. Rana? Yes, you can call him in this stand. Yeah. Would you like to explain the jury and judge about the report that was being submitted by the forensic department? Dave. Anji? Yeah, sure. Do you want me to swear? Yes, I would like you to Yes, swear. please. So, in the name of the Constitution of Los Santos, repeat after that. In the name of Constitution Of Los Santos. of Los Santos. Yes. I would only say the truth, nothing apart from the truth. I will only say the truth, nothing apart from that. Yes, go ahead. Honorable Judge, the report which I have presented to the court and which I have analyzed, the DNA, it's not a perfect match with the Officer Sangram's DNA. However, 96.75% it matches with the DNA which we obtained from the dagger or the knife, and it matches with Officer Sangram Singh. And though it's not a perfect match, but I'm sure and I'm convinced that It's the fine, blood Rana on sir. the knife Rana is sir, of that's it. Corporal It's fine. Sangram. Yes, that's it. Completely fine. I think so. You can go ahead with the report that was being provided by Officer Rana, and I would like to call back Mr. Robert over here. Before he leaves, I have a few questions from Officer Hana. Yes. Yes, sir. So the matrix mentioned in this 9.67%, Yes, sir. 96.7 something. Yes, sir. So like, do we have a particular scale where we can measure the correctness of that Sir, particular DNA? sir, it's not the particle scale, but we match the genomes, number of genomes, which match with. If you see, there are few codes which are missing, and there was kind of. On the basis of that, we decide the percentage. All right. Still to get a double confirmation, I see few doctors are standing behind. If we can call them in the stand, Sure, sir. we can get a confirmation from them. Yes. Sure, sir. Will do.
Officer Steve, can we have you over here? Yeah, sure. No, you have. You can leave. You can leave. Officer Steve, just repeat after me. Let's get doctor's opinion. Sorry, Dr. Steve, just repeat after me. I'm really sorry for that. In the name of the Constitution of Los Santos. In the name of the law of Constitution of Los Santos. Yeah, I would only say the truth, nothing apart from the truth. I would only speak the truth, nothing else apart. Sure. Sorry, Dr. Steve, can you just tell us about the accuracy of this report? How it justifies the personality of the person whom has been murdered, and what all precautions have been taken care of while preparing out these reports? Can you specify which report ठीक are है We क्या are बोल रहे हो talking about the blood sample report that was being produced by the forensic department of PD. I'm just gonna share you a copy for your reference. It would be great because I have no information regarding the forensic. Yes, please share in the report. बिल्कुल वैसी फील आ रही मम्मी को हेलो बोलो डोमो मम्मी को यार पता नहीं हाथ रखे हुए कैसे हाथ पहुंच गया इनको मुझे लास्ट टाइम में पहली बता The report has been shared to you. जूलिया प्लीज धीरे बोल लो Kindly give me a minute to go through it. Sure. बुंड का है बे बुंड फट गया था अच्छा इसको बाहर निकाल के फेंक देंगे वो धीरे बोलना, ऐसे बोलेगा तो फेंकी। भाई तेरे को फेंकूंगा मैं Yeah, I've gone through. ये आस पड़ोस वाले ना कंप्लेंट कर देंगे मैं सबूत तो देखो सबूत आए Yes, can you just provide out just a summary of the accuracy of this report to judge? So as I can see, the भाई इसको तो बाहर फेंक के रखूंगा मैं रुको percentage has been achieved. So depending on the condition of the तुम क्या लगता है रिलैक्स हो या बाहर जाएंगे? The doctor is not audible. Doctor, you're not audible. really. Momo, do you trust No, am I audible? Yes. I Now you are. Yeah, In can an you ideal repeat the last situation, line? in an ideal situation, it's 100% we can determine. But as you know, the item has been confiscated by the PD from an unknown environment. So bond particles do affect the result. वो किसके पास है The accuracy is affected by the bond particles. हाँ So we can see a lesser amount of accuracy in here. And yes. भाई साहब मेरे को सबूत दिख रहे हैं All right, doctor. Thank you for being here. Thank you, Dr. Strange. So I would like to call Officer Robert back in the witness box. Yes, please. In the meantime, Mr. Lex, would you like to cross question anyone? Yes, Honorable Judge. Okay. So once Mr. Robert completes his statement, you can cross question. All right. Sure. Yes. Yeah, Rock. Continues. Yes, Mr. Lex, wanna cross question you, no? Okay, cool. Yep. Yeah, Mr. Lex. Hello, Officer Robert. Hello, sir. You do know that you are under oath, right? Yeah. And any lie that you say right now is something that's punishable. Yes, sir. Did you and your other former CID members kidnap me? ले भाई Sir, it's misleading. This objection. It's not. I mean, this is not related I will to- showcase the relation. Yes. I will, Honorable Judge, if this I mean, question is answered, I will if you showcase can the relation. prove that
Objection sustained, but you need to provide a reason regarding this. जी ऑनरेबल जज मैं प्रोवाइड करता हूँ, कोई बात नहीं। ऑफिसर रॉबर्ट, आप वो फोटो पुट अप करेंगे वापस, कौन सा that जिसमें Rock, can जी you do that please? Which photo you want, sir? खत्म भाई, खत्म खत्म ब्रो। The dagger evidence. Okay. उसने तो सीधा बोल दिया भाई। Officer Robert, I will just ask you Yeah. one question. Yes sir. Do you see me holding and killing Officer Sangram? Yes or no? No. Okay. जहाँ तक वो डैगर की बात है, ऑनरेबल जज, वो डैगर एक्चुअली मैं किडनैप था बाय सीआईडी ऑफिशियल्स, एंड वो डैगर मेरे को दिया गया था और मेरे को बोला गया था कि अगर मैंने सरेंडर नहीं कराए जाके एज लीजन तो देन दे विल किल मी, क्योंकि ये मेरे को 2 बारी किडनैप कर चुके हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन अंडर ओथ फ्रॉम ऑफिसर रॉबर्ट, if he captured me or the CID officials captured me or not, and that is why it has a direct relation to this particular case, But if I am legion or not. I mean, Mr. Lex, you do know, right? This has serious allegations, and you do require proofs to prove them. I know, officer, I know, honorable judge, and that is why I would like you to appoint a team of honest and not corrupt officers to investigate more on this. मैं इतने दिनों से जेल में था, मैं नहीं कर पाया इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट फर्दर या प्रूफ्स नहीं कर पाया, बट यस दिस इज अ फैक्ट एंड आई एम पुटिंग दैट एलिगेशन, और अभी वो एलिगेशन प्रूव हो जाएगा इफ ऑफिसर रॉबर्ट आंसर्स दिस क्वेश्चन, इफ ही किडनैप्ड मी एंड टॉर्चर्ड मी. No. You did not kidnap me and torture me, Officer Robert? No. Okay, great. So you are denying. You are saying कि जब ये टागर आपके हाथ में नहीं था और आपको ये कहा गया कि सीआईडी ऑफिसर ने Officer Robert, I do not need statements from you. I asked you a question. क्या आपने मेरे को किडनैप करके मुझे टॉर्चर किया था? Can you give me a date? You are saying जिस दिन आपके साथ ये चीज हुई. Yes, मैं आपको डेट भी दे सकता हूँ. Just give me बताइए, डेट बता दीजिए. Objection, my lord. What's the objection? Mr. Lex is just making out statement over here. As you might not know, Mr. Robert and Lex was kidnapped together over here, and during this situation, like this can't be happen that both the person are being kidnapped, and he is just pointing out that Robert was being responsible for it. I do have evidence. I'm not saying Robert was responsible for it. I'm not saying just Robert was responsible. You Okay, did I'm mention. not. So, I do have evidence. I for first it. want to hear out his side of story. Sure, Then sir. we can continue. You can Sure, sir. always like defend. For sure. Yeah. Just give me 1 second. Just make Yeah, sure I'll the just allegations tell you you are the making, date. you do have proper proofs for that. Absolute. Proper proofs नहीं हो सकते मेरे पास, ऑनरेबल जज हो सकता है, but I am going to prove that I won't be was able kidnapped. to take that. नहीं, but I will prove to you that I was actually kidnapped, and this happened on Tuesday, which is 7th of February, and I also have a medical report from Dr. Strange, which I have already sent across to you. सर आपको अंदर आना है. But And please you tell me, and because you know we have already established that Dr. Strange is actually the expert, I would also like to invite him as an expert on the panel and on the in the witness box. I don't have any other questions from you, Officer Robert. Yes, Officer Robert, you can. So yeah, before calling the expert, I would like to go through the report first. Sure, please do, sir. Please, sir. Can that report be sent to me? Julia, come out right now.
Sure, just give me 1 second. Julia, don't you hear me? बाहर जा मैं बाहर निकल तो तू हेल्प कर लियो Julia, come out right now. Huh? Leave him. Don't. लेट्स भाई साहब आई लव यू देखो पकड़ के लेके जा रहे हैं मेरे को कुत्ते के बच्चे Just kindly escort the उसको gentleman. बाहर नहीं लेके जाना डिटेन द गाय obstruction of justice and disrespect पूरी मंदिर तक Julia. Cells in this facility. Put him in there till the session is over. दिमाग में बैठ रहे थे मुझे जान दो ना थोड़े यार प्लीज हेलो डॉक्टर देव नाउ आई कैन सी भाई क्या कहाँ जा कहाँ आ रहा है बाहर निकल क्या जाओ पॉल भाई ओह भाई यही तो आजा हम निकालते हैं आपको बाहर What the fuck? एक बार बता चलो बैठ जा हाँ शाहरुख भाई बैठ जाओ ये तो उन्होंने रिवर्स हो अबे गया ये कहाँ जा रहे हैं मार्स Teasing चल रही है धक्का मत दे यार उन्होंने रिवर्स हो गया Meanwhile, Honorable Judge, can we मत करो invite Dr. Strange into the witness box? I would like to cross-question Mr. Lex as well on these statements. I mean, I currently. will come to the witness box, but there is a. I hope you have been to the court enough, and there is a process that is followed. It's not just randomly basis your whims and whims. You It's can okay, Miss Lex. ask anyone to It's okay. join मैं the बैठी witness Do box. not need to इसका be. जज बाहर आ रहा है Mr. Rock, first Yes, of sir. all, let's complete his side of things. And Sure, sir. continue. So, can we ask Honorable Judge Dr. Strange to come to the witness box? As I'm done reading the report, yes, you can call the doctor. Let us know, Judge, Honorable Judge, once you have read the report. As I'm done reading the report. You're done? Okay. Yes. डॉक्टर स्ट्रेंज आपने मेरे को देखा था आपने सारी चीजें देखी थी मेरे पास कितनी इंजरीज थी मेरे ऊपर कितनी इंजरीज थी देखा था You came injured. So first of all, yeah. So first of all, before continuing, I would like to confirm, just take a formal confirmation, Mr. Paul भाई I'm in dead mafia now. So are you Yes, sure Honorable Judge. the report yes? So are you sure the report submitted by Mr. Lex Maverick has been Yes. signed by you and drafted by you? It's 100% accurate. Okay, all right, continue. थैंक यू डॉक्टर Please keep an eye on this मैंने bill. आप ऑफिसर नहीं आप तो डॉक्टर ऑफिसर थोड़ी Decide हाँ कर जी लो हाँ तो मैं ये कह रहा था डॉक्टर मेरे को बस आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में मुझे ये जानना है कि एक इंसान जिसने इतनी इंजरीज जिसके ऊपर हो जो मेडिकली आपने दिया है क्या वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है किसी को इतना बेदर्दी से चाकू मारने का क्या उसमें इतनी भी हिम्मत होगी Okay. So, Honorable Judge, after you have gone through the medical report, I have clearly mentioned that the patient स्क्रिप्टेड आरपी है भाई Mr. स्क्रिप्टेड Lex आरपी है has स्क्रिप्टेड आरपी है sustained severe leg injuries, and it is not humanly possible for any such person to do any sort of activities on this scale. And even was instructed from my side to take bed rest and not perform any physical activities until his wounds have been healed completely. करवाने के लिए प्लान था Okay. Doctor, can you provide a confirmation on which weapon or which object might have been used to Report to the courthouse clinic. harm Mr. Lex? First of all, as he has sustained multiple injuries, starting from second degree burn wounds. After going through his burn wounds, I can confirm that a sort of welding torch has been used
to torture him. Along with that, a very blunt and heavy object has been repeatedly used to beat him on his legs as well as on his limbs. So yes, a heavy and a blunt object. All right. So, anything else, doctor, you would like to add? No, that would be enough from my side. Okay. Mr. Rock, would you like to cross question him? Yes, I do. please go Dr. ahead. Strange, as you mentioned in this report, that report was done on 7th of Feb. Am I right? Yes. Okay. I want to know how much time does it take such kind of injuries to be cured for a normal person? As I mentioned that he has sustained hairline fracture on his phalanges, meaning the foot. So I have gave him appropriate treatment according to that, and approximate 2 to 3 days can be taken to cure from this injury. Of course, if a Just- person is yeah, Just can I- asking, just asking you only, ex-officer Rock. Are you doubting your own expert witness? Mr. Lex, you would be given time. Sorry. Let him complete first. Yes. Thank Okay, you. so No, actually, he's asking no, the I'm just doctor making and out he point. presented. I'm just making out No, it's point okay. for. He can question the doctor, and after that, you can Sure, provide sure. the defense Sure, first. sure. So Sure, as per Honorable your Judge, sorry. statement, it usually take around 2 to 3 days. Yes, Is it yes. fine? Yes, Okay, sir. so if a person is having a hairline fracture, I personally believe in his leg, he can't take out any vehicle, can't drive it. According to me, yes. No, he can't. Okay. Just wanted to make this point out over here that a person who usually have a hairline fracture on his leg, Judge, I want to point this thing out, that he can't drive his vehicle. And according to Dr. Stephen Strange, it's usually take 2 to 3 days time period in order to get cured by such kind of issue. Yes. That's If it. he completely takes bed rest, then yes, 2 to 3 days would be enough. For sure. Thank you. That's it from my side. Okay. Yes. Anything else, Mr. Honorable Judge, yeah, can we get Officer Rana back on this time? I mean, are we done with doctor? Yes, we are done with the doctor. Thank you, Honorable Judge. Thank you, doctor. Thank you for your expert advices, doctor. Thank you, and thank you so much for saving my life. No worries, Mr. Lex. Yes, Officer Rana. Officer Rana, I'd just like to remind you that you're still under oath. Yes, sir. I remember. Officer Rana, did you and other individuals of the department kidnap me on 7th of February and tortured me? No, sir. I want a yes and no answer. No, sir. I did You not. didn't. I did not Objection, do my that. lord. What? He's just What's the misleading the state, misleading Mr. Rana as of till How now am he I has not provided. As No, of no, till I'm now asking you have how am I not provided. misleading? How am I misleading? Objection sustained. So, Mr. Lex, last time I did give you an opportunity to let this court know that what all has happened with you, but you were not able to provide any specific proofs. As you mentioned that you need an inquiry, which will be done after this case. But till then, please avoid this question. Thank you. Sure, Honorable Judge. Okay. Yes. All right, then, Officer Rana, you're free to go. Thank you. But I would just like to point out one thing, Honorable Judge, that no proof on a has second, been Rana. provided yet that I, Lex Maverick, has killed Officer Sangram Singh. It's just a photo of a person in a mask, and just because I had the weapon, it does not mean that I did that heinous crime, and that's all. All right. Point noted. Okay, your witness. I want Mr. Rana to state out one thing. Were you present at the situation when Mr. Lex Maverick yesterday came and surrendered at PD? Objection, Honorable Judge. He's leading the witness. He is asking the witness to provide a statement. He needs to ask questions and not ask witnesses to provide statements It's when a he wants question, them to. Mr. Lex Maverick. It's an objection he's leading. Can you repeat what was the question? That were you present yesterday when Mr. Lex Maverick
surrendered at PD? That's the only question which I asked. Objection overruled. Yes. Okay. He's just asking a question, Mr. Lex. If Yes, you would like to I am add sorry, anything. Honorable Judge. The first time in No, you don't need to be sorry. It's okay. Honorable Just go ahead. Judge, shall I answer? Yes. Yes, please go ahead. I was in the city, but the moment when he came and surrendered in front of PD reception, I was not available. The moment he was in the interrogation cells, I was in the interrogation cells. अच्छा सुनो Sure. सुनने आ रहे हो ना? Officer Rana. Judge me, bro. That's it. And would you like to tell to the court who was the officer who actually greeted out Mr. Lex Maverick when he came at PD? I think I got a call. We got a call from either Robert or Igor. I exactly don't remember. Objection, Honorable Judge. Here say. Objection sustained. अरे मेरे को उठना पड़ता मैं जा रही हूँ सोने अभी जल्दी बोलो फिर Okay, that's it. It's fine. I would like to call Mr. Lex Maverick over पक्का नहीं आ here. रहे हो ना सरप्राइज नहीं देना मुझ फोड़ूंगी Yes, please. Yes. Sure. Mr. Lex, I believe you know you are under oath. So. Yes, I do. Bye. Okay. As you mentioned that you came to Dr. Stephen Strange on the day of 7th of February, would you like to tell to the court what exactly happened with you on that आपकी day? आवाज नहीं आ रही ढंग से बहुत धीरे है Honorable Judge, if I start sharing what exactly happened with me that day, but then it will be considered as hearsay because I do not have any proof of it right now. So do you want me to mention it? Igor I mean, you can narrate. Igor मैंने आपको कॉल दिया था Igor ने Okay, Obviously, you can so provide your side of view. I was asked to visit MRPD by officers Sangram Singh and Officer Veer. I was asked to visit the MRPD. I reached there, and as soon as I reached there, there was some hostage situation that happened at MRPD. As soon as I reached there and started answering questions, some questions which they had for me. There were two individuals. There were two individuals who were armed, who had 5 hostages, and there were about 8 to 10. I'm not sure, but there were about 8 to 10 PD officials with class 2s and class 3 weapons. And I was exchanged with those 5 hostages. I was given to those only two, I would like to point out again, Honorable Judge, only 2 criminals who were holding those 5 hostages. Then they made me, a PD chopper was provided to them for escaping. And there was a mask on me and I was not able to do anything, see anything where I was being taken. जज कौन है वो है And ऋषिता after that, I went into a facility where I was tortured. I was asked that I should surrender, that I am Legion. They were constantly asking me and forcing it on me that I was Legion. And 2 PD officials, they were in masks, so I could not see who the exact people were. But 2 PD officials took off their masks, which were Veer Suryavanshi and Officer Rana Pratap. They were the 2 individuals who had taken off their masks. And then they tried to play good cop, bad cop with me. Officer Rana came and he said that, why don't you just accept it? Please accept it. It'll save our jobs and stuff. But I think then I was asked to narrate. Can I just complete? Yes, Can I yes, just yes. completely You were- narrate? you- And then It's okay, Mr. Rock. He's just narrating. We are not Sure, taking sir. anything into consideration as of now until Mhm. and unless we have proof. So don't worry. Mhm. Yeah. Continue, Mr. Lex. Yes, and then I think something happened, and then they put a mask on me again, where I was not able to see anything, and they dropped me off on the road. All right.
So did anyone saw you? Like as you mentioned, you do not have any specific proofs, but obviously someone might have saw you. One person saw me. I'm forgetting the name, but because of what has happened to me over the course of last 2-3 days, I'm forgetting his name. But one person saw me. He dropped me because I wanted to make a call to the people I trust the most. One person saw me and dropped me to Digital Den to buy a phone. I bought a phone and then called up Eightfold Martin first there, and he came there, and then we went to the pillbox. All right. And regarding the event, so on which particular date does this event occur? 7th of February. Okay, 7th of February. And the two names you are taking is Officer Rana and Officer Veer. Yes. Okay. Okay. So moving further, so this is the end of your narration. Yes. Okay. Officer Rock, you can cross question. Okay. And Mr. Rock, So after Lex, after having such a tragic भाई नींद आ रहा है यार. or incident, how would you say, on 7th, after that, did you ever encounter any kind of meeting with any of the PD officials after 7th, or you were just taking out rest? I would like to plead the 5th. Okay. Do you know when Mr. Sangram was murdered? No. And when was the statement was being made that take this knife and surrender at PD? As can you just provide me a date exactly? This was done yesterday. And can you provide out the name of the person who said that? Can I get a 91 I at will Bullet say the Group? I name, was but then you will say that I do not have any proof to back it up. It's fine. We just wanted to know that. It was Officer Rana. It was Officer Rana. क्या? And can you just provide out the exact timing when this happened? क्या हो गया? कल किडनैप I किए am a little hazy about the timing because I was में under आगे कैसे आ medication. जाता हूँ? For sure. I think it was in the evening, somewhere around. किस चीज के लिए लिया? I think it It's was. fine. It's fine. It's fine. If you don't remember, it's okay. Yeah, I don't. I don't. Okay, Mr. Lex. How did you came to PD? इन्होंने कहा था कि I came in my own car. क्या? इन्होंने कहा था क्या? Solo? Yes. Were you in a habitat to drive that vehicle? I had to because I had a threat of life on me. And was that threat given out on a phone? Relax. No, in person. In person. A threat Yes. was given out by Officer Rana, according to you, exactly in the evening when nobody was present around you while you were having what we say. You were under medication. Is it Near the apartments? Yes. Yeah, near the apartments. Yes. Okay. It's not admissible. Why? Okay. And who handed that Why dagger is it to not you? admissible? Officer Rana. Officer Rana. Okay. Why is it not admissible? Okay. Rock That's ko do, fine. he will decide. Mr. Lex, another statement which I wanted to Given know already. out from you, while, as you PD को दिया said, कोई भी you were statement being kidnapped admissible by नहीं PD होता court में. officials. Hold on a second. Yeah. While you were being kidnapped by PD officials, why didn't you make out any kind of report to PD? Ex-officer Rock, because I had to go out and report to the PD. The people who had kidnapped me, I obviously did not want to go out and report to the PD, and that is the reason I asked for this court hearing today so that I can say that in front of the judge. You could have done The a honorable judge. 911. And risk getting kidnapped again by the PD officials? No, I'm sorry. I was too scared. You were too scared. Okay. That's fine. I would like to call Mr. Ikor over here, Honorable Judge. Sure. Yes, please. Oh, honorable judge वो बोल रहा है sure. किसके सामने सरेंडर किया था? Good evening, Honorable Judge.
क्या हो Good गया? evening, officer. Kindly take a oath first. कैसे आ रही है? Mr. Rock. Am I audible? Yes. Yes. Igor, just follow after me. Okay. Sure. चल खुद चला के In the name of the Constitution of Los Santos. In the name of the Constitution of Los Santos, I will only say the truth, nothing apart from the truth. I'll say the truth and I'll not say anything other than that. Sure. Okay. Officer Igor, were you present when Mr. What we say, Lex Maverick came to PD and came here for surrender with a dagger in his hand? Yes, sir, I was there. So can I explain? Yes, you can. So I was off duty at that moment. I was in front of the PD, standing there with my friends and trying to go somewhere and having a talk with them. While I saw a black color Lexus black color, fully black tinted car arrived there. It's like it stood on the signal for like 20 seconds. Then the vehicle came and parked. From which Lex came out, and he came to me straightforward and he asked for who was the most senior officer present right now. वही तो मैंने point बोला. I said on duty or off duty. He said whatever. करा तो Whoever. है, रुको ना. So I मैं said से वही बुलवाना चाहता हूँ, रुको. Trooper Jimmy was there. Then he said, I'm here to surrender. I am Legion. In the first reaction, I could not believe and I said, are you fine? What happened? So he said, it is not a joke, and he pulled out the dagger in front of me. So I got panicked and I pulled out my gun in the response and I asked him to put that dagger again inside. And he said, I am the Legion. I killed Sangram with this dagger. You can see the blood on this dagger. So this was his words at that moment. Then I called up the officers. I took him inside the reception area. I asked him again and he confirmed me again. Then I just cuffed him and the rest everyone knows. So this happened. Okay. You would like to first ask any questions? Mr. Rock cannot hear you. Mic move. I would like to ask questions, Yes. cross-question him. Okay. Yes. Am I audible? Yeah, Mr. Lex, you can ask him after. Okay. I thought Officer Rock was ex-Officer Rock. Sorry. Yes, Mr. Okay. Rock, you can continue. Yes. So, Mr. Igor, when you saw Mr. Lex coming out of his vehicle, do you think was he in a proper condition in order to walk out and just come to MRPD and to declare him as Legion? Yes, sir. He was totally fine. Objection. He came out of the vehicle. And what is the objection? He is not a medical expert to just see a person and tell if he is in a condition able to walk or not. The medical expert has already spoken, Honorable Judge. Objection sustained. Kindly reframe your question, Mr. Rock. Okay. Igor, as per Dr. Stephen Strange, a person who has been suffered with such major injury, he cannot drive a vehicle on his own. But even having so much pressure by PD officials who try to threaten Mr. Lex Maverick, do you think he would have been able to walk it out, came to the PD and say, yes, I am Legion? Objection. Honorable Judge, he's repeating the same thing. He's leading the witness of what he needs to answer. Objection sustained. Mr. Rock, kindly ask the question in a yes or no pattern. Okay. Do you think Mr. Lex Maverick, who was injured on 7th, came up with a dagger at MRPD and says out that I am Legion? Did you believe at the first place? No. Okay. Did he provided any kind of statement while he was kept under the custody when he was surrendered? Yes. Okay.
Judge, I would like to present that recording of that statement in the court, which says that Mr. Lex Maverick is responsible for